లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమిదే నైతిక విజయమన్నారు ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్. బీజేపీ 400 సీట్లు నినాదం ఫెయిల్ అయిందన్నారు. తమకు యూపీలో 80 ఎంపీ సీట్లు గెలిచిన ఈవీఎంలపై నమ్మకం ఉండదన్నారు. ఈవీఎంలను తొలగించే వరకు పోరాటం ఆగదన్నారు. అయోధ్యలో తమ అభ్యర్థి గెలుపు శ్రీరాముడి తీర్పన్నారు అఖిలేష్ యాదవ్. अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఈసీ బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించిందని ఆరోపించారు టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసేందుకే 7 దిశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారన్నారు. బీజేపీ లీడర్లకు అనుకూలంగా ఆఫీసర్ల బదిలీలు చేశారన్నారు. ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు. ఈసీ కేంద్ర బలగాల వల్లే వెస్ట్ బెంగాల్లో బీజేపీ కొన్ని సీట్లు గెలిచిందన్నారు కళ్యాణ్ బెనర్జీ. Whether the Election Commission of India has conducted election in 2024 impartially, in our state Election Commission of India had acted on the basis of the desire of the Bharatiya Janata Party leaders. A good number of police officers, right from DG to OC, were transferred because of the desire of the BJP leaders. And not only that, before effecting such transfers, the leader of the opposition of the state assembly in a public speech was used to say, these officers will be transferred, these officers will be transferred, these officers will be transferred, these officers will be transferred. You know, the Election Commission of India has acted in terms of the dictation of the Bharatiya Janata Party leader. Election Commission of India, every stage, every time, Election Commission of India has interfered with the election process. Not a single one has been fed. But when we lost the complaint against the BJP candidates and the BJP leaders,
No step was taken. No step was taken. Even marginal win, 10,000 seats, 7,000 seats, 8,000 seats, 8,000 votes. They have won because of the blessings of the Election Commission of India. Otherwise, you would not have seen even the 12% from the Bharatiya Janata Party from the West Bengal. What the CISF has done, sir? CISF, they were threatening the voters. Go and cast votes in favor of the Bharatiya Janata Party. Do you know in the fifth phase of election, that is on the date of my election and Safda Amal's election, do you know, previous night, CISF entered into the house, molested two women. One is at Uluvadia and one is at, yes, and one is at my constituency, Jangipara. It is the same to Mr.